आज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2025 में जो आपका 30 नवंबर आज ही की डेट में पेपर हुआ है AIBE-20, उसके हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसकी मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा आंसर के साथ में। और मेरे पास ये सेट ए है, तो बाकी सारे देखिए क्वेश्चन इधर उधर होते हैं, ABC जितने भी आपके सेट होते हैं, लेकिन क्वेश्चन सारे टोटल यही आएंगे, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से समझ लेना। देखिए पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, इफ ए bailiff executes an eviction based on a civil court order later declared void for lack of jurisdiction, what protection does section 78 of IPC provide? इसका देखिए ऑप्शन जो है करेक्ट है वो ऑप्शन सी है। इसके अंदर सेक्शन 78 ऑफ द इंडियन आईपीसी exempt a person from criminal liability if they act in pursuance of the order or sentence of a court of justice provided the act was done in good faith। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडर द BNS 2023 what is the maximum number of consecutive days an offender may be kept in solitary confinement at a time? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वो है 14 डेज के अंदर अंदर तक कर सकते हैं। और इसकी एक्सप्लेनेशन है, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 73 आईपीसी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन इन BNS द maximum period of consecutive solitary confinement at a time is 14 days। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 व्हाट इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल इन द इवेंट ऑफ डेथ कॉज्ड बाय अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट अंडर ए नो फॉल्ट लाइबिलिटी? क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 50,000 रुपीज। According to Section 140 of the Motor Vehicle Act 1988, no fault liability, the fixed compensation for death caused by a motor vehicle accident was 50,000 rupees। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। Given below are two statements, one labeled as assertion A and the other labeled as reason R। Assertion कहती है, an employee can be deemed to be in continuous service for 1 year only if he has worked for 365 days in the preceding 12 months without any interruption। Reason है इसका, under the Payment of Gratuity Act 1972, continuous service may also include period of interruption due to sickness, accident, leave, layoff, strike, or lockout not caused by the employee's fault। In the context of the above assertion and reason under the Payment of Gratuity Act 1972, which one of the following is correct? इसका देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी जो है, ए इज ए इज फॉल्स एज कंटिन्यूस सर्विस डज नॉट रिक्वायर 365 days विदाउट इंटरप्शन। रीजन है आर इज ट्रू, सेक्शन 2A ऑफ द सॉरी ग्रेजुटी एक्ट इज इंक्लूड्स इंटरप्शन ड्यू टू सिकनेस, लीव और ले ऑफ। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज बेयर विद मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, रीड द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट, under the IPC, if a person harbors an offender who has escaped custody for an offense punishable with imprisonment up to 3 years, he shall be punished with imprisonment up to 7 years। Statement है 2, the law provides an exception for harboring or concealing by the husband or wife of the offender। In the context of the above statement under the IPC, which one of the following is correct? देखिए ऑप्शन 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। The reason is statement 2 is true. Section 212 of the IPC provides an exception from punishment for harboring or concealing for the husband or wife of the offender। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। If a person attempts an offense punishable with a maximum of 10 years imprisonment, what is the maximum what is the maximum years of imprisonment that can be imposed under section 62 of the BNS 2023? क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है इसका। ऑप्शन ए है 5 years, जो कहता है सेक्शन 62 कहता है, स्टेट्स दैट द पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग एन ऑफेंस शैल बी फॉर अ टर्म दैट मे एक्सटेंड टू 1/2
of the longest term provided for the offense, that is 5 years for a 10-year max offense. Okay. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं इसके. क्वेश्चन नंबर 7, a juvenile aged 14 years is brought before the court for an offense not punishable with death or imprisonment for life, under which provision of the Code of Criminal Procedure 1973 will the case primary fall? ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, सेक्शन 27. रीजन है इसका, ये सेक्शन 27 डील्स विद द jurisdiction in case of juvenile under 16 for offense does not punishable with death or life imprisonment. क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं. अंडर सेक्शन 290 क्लोज 1 of BNSS 2023, within how many days from the date of framing of charge can an accused file an application for plea bargaining? क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, 60 days. ये कहता है 290 290 clause 1 requires an application for plea bargaining to be filed before the charge has been framed. Question number 9. Under the BNS 2023, if a person is ordered to pay a fine of rupees 4,000 but fails to do so, what is the maximum simple imprisonment the court may impose on the defaulter? क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है डी इज करेक्ट आंसर, 6 months. ये कहता है सेक्शन 68 कहता है इक्वल टू सेक्शन 67 ऑफ आईपीसी है, ये प्रोवाइड्स दैट इफ द फाइन एक्सीड अ सर्टेन अमाउंट द डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 month. क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ BNSS, व्हाट इज द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट? ये थोड़ा सा कट रहा है क्वेश्चन. रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर. तो इसका 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो कि 10 years है. ये कहता है द रिक्वायरमेंट फॉर ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 18 क्लोज 18 BNSS इज जनरली 10 years ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है. क्वेश्चन नंबर 11 है अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट when can facts that are otherwise irrelevant be considered relevant? तो 11 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, when they are inconsistent with the fact in issue or relevant fact. इसकी एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 11 makes facts relevant if they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं. What condition must be satisfied for prior evidence to be relevant under section 33 of Indian Evidence Act 1872? 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द प्रोसीडिंग was between the same parties or their representative in interest. इसकी एक्सप्लेनेशन है requires section 33 requires that for prior evidence to be admissible, the proceeding must have been between the same parties or their representative in interest. क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ड्यूरिंग ए कोर्ट ट्रायल the defense lawyer objects to the admissibility of certain papers produced as evidence. The judge clarifies that only documents categorized as public document under the Indian Evidence Act 1872 can be accepted without strict proof. Which category of documents would fall under public document in this context? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स. देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 74 पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो कि डिफाइन करता है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को टू इंक्लूड documents for forming the acts or records of the acts of judicial and executive acts of public officers. क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं. Which condition must be satisfied for things said or done by one conspirator to be admissible against others under BNSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम? इसका जो 14 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कहता है देयर मस्ट बी रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव अ कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट. सेक्शन 8 ऑफ द
BNSA कहता है requires that there must be reasonable ground to believe a conspiracy exists before the actions of one conspirator are admissible against other. क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं. As per section 30 of CRPC, if a magistrate sentenced a person to 2 years imprisonment and a fine, what is the maximum imprisonment he may impose in default of payment of the fine? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 6 months. Under section 30, imprisonment in default of fine can be up to one fourth of the maximum term of imprisonment sentence, that is 6 months for a 2 year. मतलब 2 साल को आपके 4 हिस्से करेंगे तो 6 महीने आएगा. क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं. एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल was modified to ensure early childhood care and education below the age of 6. इसका देखिए 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी. ऑप्शन डी 86 जो अमेंडमेंट आया था, इट सब्स्टिट्यूटेड द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 45 to include early childhood care and education for children up to 6 years. क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं. According to the CPC, who can direct the court that pass the decree to take security when an executive execution order is challenged in appeal? देखिए इसका 17 का करेक्ट आंसर है बी, द appellate court hearing the appeal. 18 सॉरी 17 का करेक्ट आंसर है बी. अंडर ऑर्डर 41 rule 5 of the CPC, the appellate court hearing the appeal has the power to order a stay of execution. क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं. Under the CPC, how many High Court judges constitute the judicial membership of the rule committee? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3 judges of the High Court. देखिए as per section 123 of CPC, the rule committee shall consist of the judges nominated by the Chief Justice, the number of which specified as 3 judges of the High Court. क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं. According to the Copyright Act 1957, what is the ordinarily the maximum punishment for copyright infringement under section 63? लेकिन 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए. ऑप्शन ए है imprisonment up to 3 years and fine up to 2 lakhs rupees. 19 देखिए it sets the maximum punishment for infringement at imprisonment up to 3 years and fine up to 2 lakhs rupees. क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं. As per the Constitution of India, a linguistic community in India seeks to preserve its unique script literature. Which constitutional provision guarantees them the right to conserve the same? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कहता है आर्टिकल 29 क्लोज 1 guarantees the right to conserve a distinct language, script और culture. क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 है, अंडर सेक्शन 58 ऑफ CPC, what is the maximum period of detention in civil prison for a degree amount exceeding 5,000? इसका 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 3 months. Section 58 of the CPC limits the maximum period of detention in a civil prison for a degree amount exceeding rupees 5,000 to 3 months only. 22 का which of the following situation falls under the section 58 clause 1 sub clause B of the CPC? 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डिक्री फॉर रुपीज 3,500 डिटेंशन अप टू 6 weeks. देखिए ये जो सेक्शन 58 है, स्पेसिफाई दैट फॉर डिक्री एक्सीडिंग 2,000 बट नॉट एक्सीडिंग 5,000 द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन इज 6 weeks. क्वेश्चन नंबर 23. A civil suit is filed against Ajay and the court issues summons requiring him to appear. After receiving the summons, Ajay consults his lawyer to understand the timeline for filing his written statement of defense under the CPC. Within how many days from the date of service of the summons
मस्ट ही सबमिट हिज रिटर्न स्टेटमेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 30 डेज। ऑर्डर 23 में से ऑर्डर 18 रूल 1 अगर आप पढ़ेंगे, द डिफेंडेंट मस्ट फाइल ए रिटर्न स्टेटमेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हाउ लॉन्ग डज द रजिस्टर्ड एड्रेस फर्निश्ड अंडर सेक्शन 14 ए क्लोज 1 ऑफ द सीपीसी रिमेन वैलिड इफ नॉट चेंज्ड। 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2 years after final determination of the cause. Section 14A clause 2 of the CPC provides that the registered address shall be deemed to be the address of the party until 2 years after final determination of the cause. Next question 25 पे चलते हैं। According to section 25 clause A of Arbitration Act, what happens if the claim fails to submit his statement of claim without sufficient cause? 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी द ट्राइब्यूनल टर्मिनेट्स द प्रोसीडिंग। इसकी एक्सप्लेनेशन है ये जो है सेक्शन 25 mandates that if the claimant fails to submit his statement of claim without sufficient cause, the arbitral tribunal shall terminate the proceeding। 26 पे चलते हैं। If a case is transmitted to the central government under section 10 of the Special Marriage Act, what is the time limit for solemnizing the marriage after its decision? 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 3 months। ये प्रोवाइड्स करता है दैट द मैरिज मस्ट बी सोलमनाइज विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ नोटिस। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म of imprisonment prescribed under section 31 of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 for breach of protection order? 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है इसमें 1 year। देखिए अ पब्लिक इंटरेस्ट सॉरी सेक्शन 31 क्लोज 1 है डीवी एक्ट का। प्रिस्क्राइब द पनिशमेंट फॉर ब्रीच ऑफ अ प्रोटेक्शन ऑर्डर एज इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 year। 28 पे चलते हैं। अंडर विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बी फाइल्ड डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट? 28 का करेक्ट आंसर है आर्टिकल 32 ऑप्शन बी। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। 29 के अंदर अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड दैट मस्ट elapse between the publication of notice and the appearance of person interested before the collector? 29 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नॉट लेस देन 15 days। सेक्शन 9 of the Land Acquisition Act required the collector to issue a notice requiring interested person to appear on a day not earlier than 15 days। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है under which provision can a citizen file public case in the court of magistrate regarding issue of public interest? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन 133 criminal procedure code empowers the district magistrate to pass a conditional order for the removal of a public nuisance। इसमें क्या क्वेश्चन पब्लिक केस, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। 31 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 डबल ए क्लोज 2 सब क्लोज आई ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ए पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस मस्ट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ इफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड्स। 31 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1,20,000। ये जो सेक्शन है रिक्वायर्स बुक ऑफ अकाउंट इफ इनकम 1,20,000 इन एनी ऑफ द 3 preceding years। 3 साल तक का रहता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। अंडर द पेटेंट एक्ट 1970 विच सिचुएशन प्रिवेंट्स अ पेटेंट एप्लीकेशन फ्रॉम बीइंग पब्लिश्ड इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड? इसका करेक्ट आंसर है 32 का ऑप्शन बी व्हेन सीक्रेसी डायरेक्शन इज इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 35 section 35 provides that if the central government imposes a secrecy direction
the patent application shall not be published. क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं. 33 कहता है given below are two statements, one labeled as assertion and the other labeled as reason assertion. Any person having an interest in newspaper declared for fortified may apply to the High Court or to set aside the declaration within 2 months of its publication in the official gazette. Reason इसमें है the section uh, the special bench of the High Court to hear such application must always consist of exactly three judges, regardless of the strength of the High Court. In the context of the above assertion and reason under the Civil Criminal Procedure, which one of the following is correct? 33 का करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, जो कहता है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. इसकी एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ आपको. Reason देखिए R is false because section 90 to 96 clause 2 CRPC specify that the special bench must consist of three judges or all the judges if the High Court has less than three, not regardless of strength. आपने ये देखिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन डबल एक तरीके से आपके पास आ गया है, इससे पहले भी था, ऊपर भी ये क्वेश्चन आया लेकिन दूसरे तरीके से. क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं. Read the following statement and choose the correct option. Statement 1 है under the भारतीय साक्ष्य अधिनियम admissions are generally relevant and may be proved against the person making them but cannot ordinarily be proved by or on behalf of the person. Statement 2 है an admission can still be proved on behalf of the person making it if it relates to the existence of a state of mind or body made or about the time when such a condition existed and supported by conduct showing its truthfulness. In the context of the above statement under the Bharatiya Sakshi Adhiniyam, which one of the following is correct? 34 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो कि both the statements are true. देखिए इसमें अब एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं. 35 पे चलते हैं. Which type of allowance qualifies for deduction under section 16 clause 2 of the Income Tax Act 1961? 35 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एंटरटेनमेंट अलाउंस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं. रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट 1 अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, a negotiable instrument act may instrument made, drawn, accepted or transferred without consideration creates no obligation of payment between the parties to the transaction. Statement 2 है according to the same according to the same act, if the consideration for which a negotiable instrument was issued fails in part, the holder in immediate relation is entitled to recover only the proportionate amount corresponding to the consideration actually received. In the context of the following of the above statement under the NI Act, which one of the following is correct? देखिए 36 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. 37 पे चलते हैं. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन a statement is followed by true conclusion 1 and 2. Statement under the Environment Protection Act, when an offence is committed by company, every person who was directly in charge of and responsible to the company at the time of the offence as well as the company itself is deemed guilty. However, a person may escape liability if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised his due diligence to prevent it. Conclusion is इसका a company as well as its responsible officers may be held liable for environmental offences under the act. Second है इसका an officer of a company can never escape liability once the company is found guilty of an offence. In the context of the above statement and conclusion under the Environment Act, which one of the following is correct? 37 का देखिए करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन ए जो conclusion 1 is true as the company and the responsible officers are deemed guilty. Conclusion 2 is false as officers can escape liability by proving lack of knowledge or due diligence. 38 पे चलते हैं. Under section 24A of the Income Tax Act 1961,
what percentage of the annual value of an income from house property is allowed as a standard deduction? 38 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 30। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। After a government notification is issued for acquiring Mr. Mehta's farmland under the Land Acquisition Act 1894, he notices that the income from his crop steadily decreases until the authorities finally take possession. He approaches the court claiming compensation for this reduction in profit. According to the Act, what type of loss is compensable in such a case? ऑप्शन 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज बोनाफाइड diminution of profit due to acquisition process। क्वेश्चन नंबर 40 है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35A of the CPC, what is the maximum amount a court can award as compensatory cost in ordinary cases? क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर है डी, दैट इज 3000। 41 में, according to the Indian Contract Act, when the communication of an acceptance complete against the proposer, 41 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है इसमें, व्हाट when it is dispatched beyond the control of the acceptor। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। Rahul rents a shop in the city of a running his retail business. Later, the landlord decides to terminate the lease. Since the lease is for purposes after other than the agriculture or manufacturing and there is no agriculture contract between the parties, the landlord wonders how many days notice he must legally give under the Transfer of Property Act 1882 to end the lease. What is the required notice period? क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर है बी, 15 days notice। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। ये कहता है, अकॉर्डिंग टू द एनआई एक्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ए मजिस्ट्रेट में पास इन अ समरी ट्रायल अंडर सेक्शन 143? 43 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1 years imprisonment। क्वेश्चन नंबर 44, in the following question, a statement is followed by two conclusion 1 and 2. Statement है, as per section 157 of the Complaints Act 2013, every company must within 15 days of receiving minimum intimation under section 156 furnish the director identification number of all directors to the register with the prescribed fee. Failure to comply attracts penalties। conclusion है इसमें, if one है, if a company fails to furnish DIN it can be penalized। second है, every officer of the company in default is also liable for penalty। in the context of the above statement and conclusion, which one of the following is correct? इसका करेक्ट आंसर है 44 का ऑप्शन सी, दैट इज बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ क्योंकि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें 1 and 2 follows as a provision mention penalties for non-compliance and explicitly imposes liability on the companies and every officer in default, section 157 clause 2 of the Companies Act 2013। 45 में चलते हैं। 45, read the following statement related to the Information Technology Act 2000 and choose the correct option। Statement 1, under the Information Technology Act, a digital signature certificate may suspend by the certifying authority on the request of the subscriber an authorized representative if it is considered necessary in the public interest। Statement 2 है इसके अंदर, under the same act a digital signature certificate can remain suspended indefinite without providing the subscriber an opportunity of being heard। 45 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेक्शन 37 क्लोज 1 of the Information Technology Act, statement 2 is false as DSC cannot be suspended for more than 15 days without giving a hearing opportunity। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। In the following question, a statement is followed by two conclusion 1 and 2। Statement है, according to the Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act 1986, the appropriate government credit rupees 15,000
to the Child and Adolescent Labor Rehabilitation Fund for each child or adolescent for whom the fine amount from the employer has been deposited. The amount in the fund is deposited or invested in the bank, and the interest accrued is also payable to the child or adolescent. Conclusion है the child or adolescent is entitled not only to the credited amount but also to the interest accrued on it. The government is not required to deposit any money other than what is collected as fine from the employer. In the context of the statement and conclusion, which one of the following is correct? 46 का 46 46 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 47, given below are two statement, one labeled as assertion and the other labeled as R, that is reasons. Assertion है इसमें the भारतीय न्याय संहिता prescribe the death penalty for certain form of gang rape. Reason है the purpose of this the purpose of this provision is to make all sexual offense non-bailable. In the context of the above assertion and reason, which one of the following is correct? 47 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है 47। क्वेश्चन नंबर 48। 48 के अंदर given below are two statement, one labeled as assertion and the other is reason. Assertion है under the भारतीय न्याय संहिता नागरिक सुरक्षा, if the proclaimed person appears within the time specified in the proclamation, the court shall release the attached property. Reason है इसका the attachment of property under the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता is intended to compel the appearance of the proclaimed person before the court, not to permanently deprive him his property. In the context, इसमें करेक्ट आंसर बताना है। 48 के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, both A and R are true. R is the correct explanation of A. ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49, read the given statement and choose the correct option. A dispute arises between two companies regarding the enforcement of their arbitration clause. Examine the following statement. Statement 1, an arbitration agreement must be in writing and it can be contained in contract, an exchange of letters, telex, telegram or electronic communication. Statement 2 है an arbitration agreement may be implied solely from the conduct of the parties without any written record. 49 का देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, statement 1 is true. Section 7 clause 3 and 7 clause 4 of the Arbitration and Conciliation Act says statement 2 is false as the act mandates that an arbitration agreement must be in writing. क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। In the following question, a statement is followed by two conclusion 1 and 2. Statement according to the Advocacy Act 1961, when the term of a state bar council expire without election, the Bar Council of India shall constitute a special committee consisting of the ex officio member of the State Bar Council as chairman and two nominated members. The special committee has the power to discharge all function of the State Bar Council under the new council is constituted, and election must be held within 6 months unless the person is extended by the Bar Council of India. Conclusion है इसकी, the special committee is empowered to handle pending disciplinary matters of the State Bar Council. 2 है इसका, the Bar Council of India may extend the 6-month period for holding election of the State Bar Council for recorded reasons. In the context of the above statement and conclusion, which one of the following is correct? इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का सी ऑप्शन, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। देखिए एज अ स्पेशल कमिटी कैन डिस्चार्ज ऑल फंक्शंस इंक्लूडिंग डिसिप्लिनरी एंड द बीसीआई कैन एक्सटेंड द इलेक्शन पीरियड। देखिए मैं 10-15 मिनट के अंदर मैं दूसरा भी पार्ट इसमें अपलोड करने वाला हूँ। मैं पहले ही वाला पार्ट अपलोड कर देता हूँ ताकि आप तक जब तक देखेंगे इसको दूसरा पार्ट भी आ चुका होगा। थैंक यू फॉर दूसरे पार्ट के लिए प्लीज़ वेट करें। थैंक यू।